Good morning, students. Welcome. Let's start with the 15th chapter of science, that is, some natural phenomena. Yes, so in this session, we are going to start with the new chapter, that is, 15th chapter of your science. Now, let's see the introduction of this chapter. A natural phenomena is not a man-made event. Examples include sunrise, weather, biological processes, physical processes, tidal flow, and include natural disasters such as electromagnetic pulses, volcanic eruptions, earthquakes. Yes, students, all the natural phenomena, they are not the man-made event, वो naturally occur होते हैं. जैसे examples है sunrise होना, weather change होना, या कोई भी disasters होना, volcano का eruption होना, earthquakes होना, and all that. Various types of natural phenomena occur, including the following, like geological phenomena. Geological phenomena कौन से होते हैं? जो अर्थ सरफेस से रिलेटेड होते हैं. Yes, that are volcanic activity and earthquakes. And meteorological phenomena means related to weather conditions are hurricanes, thunderstorms and tornadoes. Tornadoes भी एक प्रकार के तूफान होते हैं. hurricanes, tornadoes ये आपने सुने होंगे, या ये सारे तूफानी जो होते हैं disasters, they are called meteorological. And geological means related to the earth's surface, they are volcanic and earthquakes. Oceanographic phenomena are tsunamis, ocean currents and breaking waves. समुद्र में तूफान आना, पानी में तूफान आना, they are known as oceanographic phenomena. So all these are the natural disasters, or we can say they are natural phenomena. In class 7th you read about winds, storms and cyclones, सब कुछ पढ़ा है. You also learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. So you all learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. And students, in this chapter we shall discuss two destructive natural phenomena. They are lightning and earthquakes. So now we shall discuss what steps we can, and also will discuss what steps we should take to minimize destruction caused by these phenomena. Now students, what are some natural destructive phenomena? I told you some natural destructive phenomena are cyclones, lightning, earthquakes, etc. Lightning. What is lightning? Lightning is streaks of bright light and sound caused by electric discharge between clouds and earth or between different clouds. ये सारे लाइटनिंग प्रोसेस होती है. एक स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट आपको दिखाई देती है जब भी बिजली चमकती है, दिखती है लाइट आसमान में. दिस इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ. Yeah, earthquakes. What are earthquakes? Earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by the disturbance deep inside the earth's crust. Earth की crust में जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो उसे हम कहते हैं earthquake. Earthquake पूरी धरती हिलती है. You all are familiar with this situation, yes? And lightning and earthquakes cause a lot of damage to human life and property. बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं human life and property को. Yes, and this phenomena of lightning is very common when the wind is blowing and shaking the wires. You might have also seen sparks when a plug is loose in the socket. Lightning is also an electric spark. Lightning को हम electric spark भी कह सकते हैं. Yes, but on a huge scale. It is on the huge scale. पुराने ज़माने की बातें, एंशियंट टाइम्स, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. स्पार्क्स का मतलब ही नहीं समझते थे. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द वार्थ ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम. भगवान, कोई भगवान है जो उनको विजिट कर रहा है, उन्हें चेक कर रहा है. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग, बट वी हैव टू take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. अभी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि भगवान का कोई श्राप है या क्या है. पहले के ज़माने के लोग उसको ऐसा समझते थे. बट अभी हमें केयरफुल रहना है और हमें सारे केयर लेने हैं. Yes, students? The spark that Greeks knew about. Greeks को किसी spark के बारे में पता था. There is one topic. The Greeks were already aware of the electric charges from 600 BC. They knew that when amber, a type of resin or synthetic polymer,
एक पॉलीमर था, सिंथेटिक मटेरियल था, उसे वो लोग एम्बर कहते थे. एंड फर आर रब्ड टुगेदर, द एम्बर कैन अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर. ग्रीक्स वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. उनको पता था कि एम्बर करके जो मटेरियल है एक सिंथेटिक पॉलीमर है, और वो अगर फर के साथ उसे रब करते हैं, जब भी आपस में रब करना मीन्स घिसना, देन एम्बर कैन अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर. हेयर को वो अट्रैक्ट करता था. सिमिलरली वुलन क्लोथ्स और पॉलिस्टर क्लोथ्स ऑल्सो अट्रैक्ट हेयर एंड कैन प्रोड्यूस अ लाइट स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड व्हेन दे आर टेकन ऑफ फ्रॉम द body. This is because of electric charge. Everything was because of electric charge. And Benjamin Franklin, very important student, was an American scientist who in 1752 discovered and proved that lightning and spark produced from these clothes are all same things. मीन्स उसने बताया जो स्पार्क ये लाइटनिंग क्लोथ्स में से निकल रही है और जो ओरिजिनल स्काई में लाइटिंग होती है वो एक ही प्रोसेस है, एक ही तरह की प्रोसेस है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है. सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन इन विच ईयर? in 1752. And he also proved that the lightning from clothes and the lightning in the sky both are same process. आपने कभी कभी देखा होगा ठंडियों में स्वेटर्स में से कभी टच करते हैं तो ऐसे स्पार्क टाइप रिलीज होता है. दिस इज ऑल द लाइटनिंग प्रोसेस, यस, एंड विच इज कॉज्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ टू बॉडीज. So I hope you understood, and this was the topic which tells us that Greeks were already aware of these charges. Now our next topic is charging by rubbing, that is due to friction. Rub करना means friction produce होना. Some objects can be charged by rubbing with each other, with other objects. When objects are rubbed, they attract light objects like pieces of paper. This process is called charging by friction. इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. दो ऑब्जेक्ट्स को जब आपस में रब करते हैं, दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स. यस, सी फॉर एग्जाम्पल इज गिवन. आप लोगों ने काफ़ी बार ये ट्राई भी किया होगा. A plastic refill, scale or comb when rubbed with dry hair, paper or polythene gets charged and attracts the pieces of पेपर. आप ये फिगर्स में देखो, ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट्स किए भी होंगे, आप ट्राई कर भी सकते हैं. कभी स्केल होती है प्लास्टिक की, उसे अपने हेयर से रब कीजिए और पेपर बिट्स रख दीजिए, उसमें से पेपर को वो अट्रैक्ट कर लेंगे. सिमिलरली अब प्लास्टिक रिफिल, स्केल, कॉम जो भी आप रब करेंगे, फिर पॉलीथीन बैग्स के यहाँ के चार्ज हो जाते हैं एंड दे अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर. द चार्जेस एक्वायर्ड बाय रबिंग आर स्टैटिक चार्जेस. और ये जो चार्जेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस. यस, दे डू नॉट मूव. व्हेन चार्जेस मूव इट इज अ इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्ज मूव करते हैं तो हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. बट दीज आर स्टैटिक चार्जेस, रुके हुए. स्टैटिक मतलब स्टैंड है, स्टैंडिंग चार्जेस है, एंड सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, उसमें जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं, बट इन दिस केस दीज चार्जेस आर स्टैटिक, स्टेबल हैं. सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन. Now the next topic is types of charges and their interaction. There are two types of charges. Charges को दो types में categorize किया गया है. They are positive charge, that is plus, and negative charge, that is minus. Now two charged bodies may attract or repel each other. Charged bodies में भी attraction और repulsion होता है. Like similar charges repel each other and unlike, that is dissimilar charges attract each other. जैसे हम लोग मैग्नेट के केस में होता है, like charges repel each other and unlike charges attract each other. इन द सेम वे ये स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं इनमें भी जो सिमिलर चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. Now there is one activity that is 15.3 in your textbook. You can see there ये balloons वाली एक्टिविटी है जो यहाँ एक्सप्लेन की है. अगर दो बलून्स है, देखो सेम तरह के बलून्स दिखा हैं, प्लस प्लस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और प्लस माइनस जो है वो प्लस प्लस रिपेल करते हैं एंड प्लस माइनस जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं. आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में दो रेड बलून्स हैं, वो एक दूसरे को अगर सेम चार्ज है उनमें पॉजिटिव चार्ज है, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे repel each other. But in second case you can see one is positively charged and the blue one is negatively charged and both are
dissimilar charges, so they will show the attraction. So students, you saw that the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. Now there is one activity which shows like charges repel each other and unlike charges attract each other, which is also activity 15.3 of your textbook. Inflate two balloons and hang them in such a way that they do not touch each other. दो balloons को inflate करना है, फुलाना है, and hang like they are not touching each other. In that way you have to hang them. Rub both the balloons with a piece of woolen cloth and release them. उन दोनों को woolen cloth से rub करना है and release कर दो. You will find that they will repel each other because both the balloons are made of the same material. And अगर सेम मटीरियल होते हैं तो वो रिपेल करते हैं. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, रब अ प्लास्टिक रिफिल विथ पॉलिथीन एंड प्लेस इट इन अ ग्लास टम्बलर. Rub another plastic refill with polythene and bring it near the charged refill. These will also repel each other because refill दोनों एक ही मटेरियल है तो सेम चार्ज हुआ. पहले बलून्स में भी सेम चार्ज था तो उन्होंने भी रिपेल किया, रिफिल्स में भी लाइक चार्ज था तो रिपेल हुआ. बट नाउ unlike charges attract each other. Same next activity, what does it say? Charge a plastic refill by rubbing with the polythene and keep it in a glass tumbler. Refill को charge करके glass tumbler में रख दिया है. And charge an inflated balloon by rubbing with a piece of wooden cloth and bring it near the charged plastic refill. तभी आप देखेंगे दोनों में अट्रैक्ट होंगे. दे अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स दीज बोथ आर डिफरेंट चार्जेस, दे आर नॉट सिमिलर चार्जेस. सो दिस शोज दैट द डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी वंस मोर. जब दोनों बलून्स में सेम चार्ज था उन्होंने रिपेल किया, दोनों रिफिल्स में सेम चार्ज था उन्होंने रिपेल किया. बट बलून एंड रिफिल बोथ हैव डिफरेंट चार्जेस विच आर नॉट सिमिलर, सो दे अट्रैक्टेड ईच अदर. मीन्स दिस शोज दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. So students, let's summarize the observation of this activity. A charged balloon repelled a charged balloon. A charged refill repelled a charged refill, but a charged balloon attracted a charged refill. So does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from that of the charge on the refill? Can we say that there are two kinds of charges? Yeah. Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? So this is the observation which we have observed from this activity, that is 15.3 of your textbook. Now students, charges acquired by different objects. So it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. हमेशा ये माना गया है पहले से ही कि ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. सो इट इज गिवन अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. A plastic rod rubbed with fur gets negatively charged. सो ये सारे जो है एक कन्वेंशन है. ऑलरेडी इट इज बिलीव दैट अ ग्लास रॉड विल ऑलवेज अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड a plastic rod rubbed with rubber fur will gets negatively charged. It is observed that when a charged glass rod is brought near a plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. और अब जब भी ग्लास रॉड को प्लास्टिक स्ट्रॉ के बाजू में लाया गया, चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ के बाजू में, इट ऑलवेज शोड द अट्रैक्शन. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Yes, your guess is right, that the plastic straw would carry a negative charge is correct. The electrical charges generated by rubbing are static. Actually they are static. जो हमने starting में discuss किया था, they do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. Moving charges को हम current बोलते हैं. Current means flow. जैसे पानी में waves flow, पानी flow होता है तो we call it as a water current. Current मतलब movement. You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges, and these charges which we are doing in this chapter are static charges. अभी आप ये figures देख लेंगे. कभी कुछ objects attract कर रहे हैं glass rod को
और जो कुछ है वो रिपेल कर रहे हैं, मीन्स ग्लास रॉड को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और जो रिपेल करेंगे तो वो मतलब ग्लास रॉड को हमने क्या कन्वेंशन मान लिया है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो उसको रिपेल करेंगे वो सारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे और जो अट्रैक्ट करेंगे वो सारे नेगेटिवली चार्ज होंगे, बिकॉज वी नो दैट like charges repel and unlike charges attract each other. Yeah. So students, we end our video here for this much. For this video, this much only. Next topics we will be covering in our next video. Thank you. Stay safe. Keep learning.